ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਲਭਾ ਸੇਤੀਆ UILS ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ पंजाब यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफैसर RTI एक्ट 2005 बारे गल करांगी। अज मैनू जगत गुरु नानक देव पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी पटियाला विच आके इस विषय के बारे गल करन दा मौका मिले, तो आओ आपां इस बारे गल करिए। Starting with the RTI Act 2005, पर RTI Act 2005 start करन तो पहला we should know that why it came into existence, why it was enacted. RTI Act 2005 enact होने तो पहला we had Freedom of Information Act 2002. Freedom of Information Act 2002 ਨੂੰ रिप्लेस कर दिता गया एंड रिप्लेस करके कौन सा केड़ा एक्ट बनया RTI Act 2005. नाउ वी हैव RTI Act 2005. RTI Act 2005 why it is 2005? क्योंकि यह 15 जून 2005 ਨੂੰ इनैक्ट होया सीगा ते एप्लीकेबल होया सी 15 अक्टूबर 2005. So 2005, the year of 2005 plays a great role in everyone's life, including me, because this gives the important right to all of us being the citizens of India. So ये right सिर्फ ते सिर्फ citizens ਨੂੰ मिलिया है जो इंडिया दे citizens हैं. So जिद्दां अपने कोल एक होर एक्ट है, ओदा नाम है Prevention of Corruption Act 1988. ओदा पर्पस भी यही सीगा that we want to control the corruption, right? Accordingly जेड़ा RTI Act दा ऑब्जेक्टिव है वो भी corruption कंट्रोल करन लई है, बट RTI एक्ट दे विच मैकेनिजम्स नूं थोड़ा जिहा ईज आउट कर दिता गया, सानू प्रॉपरली दस दिता गया दैट हाउ वी कैन हैव द एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन. ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्टिव की है RTI एक्ट का? मेन ऑब्जेक्टिव इज कि आपां नूं ये पता चल सके दैट इफ वी वांट टू हैव इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी अबाउट फ्रॉम एनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. नाउ there must be a question in everybody's mind कि पब्लिक अथॉरिटी है कौन है, पब्लिक अथॉरिटी च आंदा कौन कौन है. तो अगर मैं पब्लिक अथॉरिटी की गल करा तो पब्लिक अथॉरिटी दे विच जिन्नियां भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने जिन्हां नूं फंड्स गवर्नमेंट की तरफ तो आते हैं, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी बॉडी जिहड़ी इस्टैबलिश की गई है जिहदे बारे कॉन्स्टिट्यूशन च लिखा गया दैट ओके यू कैन इस्टैबलिश दिस टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. One is which is established about whose establishment it is written in the constitution. Secondly, if by any law means it can be framed by the parliament or it can be framed by the state legislature. Parliament वो laws frame करदा है जेडे subjects दे बारे अपनी union list गल कीती गई है, ते state legislature वो subjects ते law बनांदा है जेदे बारे state list गल कीती गई है. इसलिए जिन्ने भी laws बने हैं parliament ने बनाए हों या state legislature ने बनाए हों, if any body is established as per the requirement of any of the law framed by the parliament or the state legislature, वो भी जिहड़ी body होएगी, जिहड़ी organization होएगी, वो भी public authority दे अंदर काउंट होएगी. नेक्स्ट इज अगर सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी नोटिफिकेशन कट के दस्या होए कि ये वाली एक बॉडी आपा बनानी है, सो देयर शुड बी द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी, तो वो वाली जिहड़ी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हैगी है वो भी अपनी पब्लिक अथॉरिटी च काउंट होएगी. सो कोई भी अथॉरिटी जिहदी एस्टैब्लिशमेंट विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, any of the law framed by the parliament or the state legislature with respect to the subjects given in the constitution, or any of the other body which is about which establishment it is being given in the notification which is issued by the appropriate government. Now appropriate government includes any of the government authorities who have that authority to form the organization, right? Now talking about RTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਰੋਲਸ ਕੌਣ प्ले करता है. RTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ प्ले करता है सिटीजन. Like I am also the citizen of India. Now citizens includes the NRIs also. NRIs भी RTI पा सकते हैं. RTI पाने का मेन ऑब्जेक्टिव की है? मेन ऑब्जेक्टिव इज if you want to have access to any of the information about working of any of the public authority, you can have access to this information. How? By filing the RTI. हुण तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ माइंड 'ਚ क्वेश्चन होएगा कि RTI आपां फाइल किद्दां कर सकते हैं.
अपने कोल दो मोड्स ने आरटीआई फाइल करन दे। फर्स्ट मोड इज पहला तरीका जो आरटीआई फाइल करन दा है वो है ऑनलाइन फाइल करना। ऑनलाइन तुसी आरटीआई फाइल कर सकते हो। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ rti.online.gov.in करके एक पोर्टल है ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ आरटीआई फाइल कर सकते हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸਟੈਪਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਲੋ ਥੀਸ ਸਟੈਪਸ ਟੂ ਫਾਈਲ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ। ਔਰ ਨਾਰਮਲ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਯੂ ਜਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਕਲਿੱਕ ਔਨ ਦੀ ਸਬਮਿਟ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। इदा ही तुसी एक ऑफलाइन आरटीआई भी फाइल कर सकते हो। ऑफलाइन आरटीआई फाइल करने लिए जेडी भी पब्लिक अथॉरिटी दे कोलों तुहानू इन्फॉर्मेशन चाहिए है, यू विल गो टू दैट पब्लिक अथॉरिटी, राइट। उहदे विच एक पर्टिकुलर ऑफिसर होंगे जिन्हां नू उन्होंने PIO दा दर्जा दिता गया हुंदा है। सो द PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, these are not particularly appointed officers. Among the present officers in that public authority, one person is designate करते हैं ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। among those officers one is picked up and given the designation of the PIO. For example, if anybody want to file the offline RTI, तो ऑफलाइन आरटीआई फाइल करने लिए उस पब्लिक अथॉरिटी जो तो फ्रॉम विच यू वांट द इंफॉर्मेशन, यू विल गो टू दैट पब्लिक अथॉरिटी। उस पब्लिक अथॉरिटी दे विच देयर मस्ट बी सम डेजिग्नेटेड PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। You will write the application and give it to the PIO so that PIO will provide you the information on the subject matter whatsoever you have asked in the application. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਗਏ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਟੀਆਈ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਆਰਟੀਆਈ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਆਈ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਨੋਮੀਨਲ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਨੋਮੀਨਲ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਇਜ਼ ਸਟਾਰਟਸ ਫਰਮ ₹10 to ₹100, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜਾ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਮਾਈਟ ਬੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ₹10 ਹੋਣ, शायद ₹10 तो ज़्यादा भी होन, बट इन नो केस इट विल बी मोर देन ₹100। ₹100 तो ज़्यादा वो किसी भी केस च नहीं होंगे। नाउ ये फीस फ्लक्चुएट क्यों करती है? नाउ इट डिपेंड्स कि तुहानू जिहड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए है फ्रॉम दैट पब्लिक अथॉरिटी, इन विच फॉर्म यू वांट द इन्फॉर्मेशन। यू वांट द रिकॉर्ड्स और you want to be recorded in some particular way, in some electronic way. So in that way the fee structure can fluctuate from 10 to ₹100. Talking about this PIO, this public information officer, this public information officer will take your offline application, और अगर online भी है तो public information officer दी responsibility बनती है, it is their duty to provide you the information, because at the end RTI ਦਾ purpose ਕੀ ਹੈ? Transparency ਤੇ accountability लेके आना citizens ਦੇ ਵਿੱਚ। If any citizen want to have the information regarding any functioning of any of the public authority, they can ask for that information. एंड ये राइट अपन नूं कहने दिता आरटीआई एक्ट 2005 ने। इसलिए जिहड़ा आरटीआई एक्ट 2005 है, इहदा बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है टू ब्रिंग द ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम and to held them responsible, to held them answerable. And when we held someone unstable, it means ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ accountable ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, right? So they are under obligation to provide you the information. So public information officer ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ application देनी है that you want the information in that particular subject, or the second mode that I filed the application on the online portal, PIO should provide information in 30 days of the application. जिस दिन as a citizen I filed the application, within 30 days of the filing of the application, PIO is under responsibility to provide the information to me within 30 days of the application. ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ days ਨੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜੇ ਵਧਾਏ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ depending upon different situations. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ PIO ਹੈ, PIO ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ will just collect the application from you, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਏਗਾ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਵੀ PIO ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ? PIO ਨੂੰ। ਸੋ ਇਫ ਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਬਮਿਟਡ ਟੂ PIO, total 30 days will be given to PIO to give you the information on that particular subject matter. But if
the application has been submitted to APIO, that is assistant of this public information officer. In that case, assistant public information officer will take few days to transfer your application from him to the PIO. ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 30 ਡੇਜ਼ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 5 ਡੇਜ਼ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਫ योर application has been submitted to APIO and then in that case APIO will transfer your application to PIO to give you the information. In that case the total time period to provide you the information is 30 plus 5, that is the 35 days। ਹੁਣ क्वेश्चन उठता है कि अगर कोई ऐदा दा इंफॉर्मेशन रिसीव करना बहुत जरूरी है, इट्स नेसेसरी टू gain the information because somebody is under detention, there is a question of life liberty, there is a question of life or liberty कि ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 30 ਤੋਂ 35 ਦਿਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 30 days to be very precise, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? They said no. In the case where the subject involved is of liberty or life, in that case we cannot wait for 30 days to pass on to get the information। ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ RTI ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ 30 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਓਨਲੀ 48 ਆਵਰਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਕੇਸ ਦ ਸਬਜੈਕਟ ਇਨਵੋਲਵਡ is of life or liberty, in that case the time period provided to PIO to provide you with the information whatever you have sought for is only 48 hours, is only 48 hours। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं अगर आप information PIO तो we ask the information from PIO कि तुसी सानू इस particular विषय ते information provide करो। PIO ने 30 days से तुहानू information provide नहीं कीती, या जिहड़ी information provide कीती वो full information provide नहीं कीती, हाफ इन्फॉर्मेशन है या फिर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है। सो इन एनी केस जे तुसी सैटिस्फाइड नहीं हो एज अ सिटीजन दैट दिस PIO हैज नॉट गिवन मी दी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, in that case तुसी अपील पा सकते हो। एंड अपील किनू पा सकते हो? फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी नू। ते PIO ते उपर जिहड़ा भी फर्स्ट हायर अप होएगा उन्होंने तुहाडी अपील जाएगी। नाउ अपील फाइल करन दा फिर तो टाइम पीरियड की है 30 डेज, ते 30 डेज दे अंदर अंदर तुहानू हुण अपील फाइल करनी पएगी, फर्स्ट अपील टू द फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी। हुण मान लो तुहानू फर्स्ट अपील तुसी फाइल कीती एंड नाउ अगेन यू आर नॉट सैटिस्फाइड। फर्स्ट अपील तो भी तुसी सैटिस्फाइड नहीं हो क्योंकि फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी को भी सिर्फ 30 डेज ही है तुहानू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करन दे। हुण उन्होंने तुहानू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की या फिर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, तुसी फिर तो सैटिस्फाइड नहीं हो। यू कैन गो टू दी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ते स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को तुहाडी सेकंड अपील जाती है। नाउ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ते स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, they have lot of pendencies with them, we have to give them more time, they are involved in other activities, important activities at the state level or the central level। In that case we will give 90 days time period to them। We have to file the appeal to these CIC and SIC within 90 days of the order। For example, you are again not satisfied from CIC or SIC, CIC is Central Information Commission, SIC is State Information Commission। Now again you are again not satisfied with whatever decision has been given by the CIC or SIC, satisfaction nahi hai। Now is there any other option? Other option is always with us to file the writ in High Court। आप High Court च कदे भी writ file कर सकते हैं। ये तो हो गया थोड़ा प्रोसेस। Now हुण अपने कोल इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज, इंपॉर्टेंट करैक्टर्स किहड़े-किहड़े आए RTI लई? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोल तुसी फाइल करोगे। नैक्सट वी हैव द पब्लिक अथॉरिटी जिन्हां बारे आपां नूं इन्फॉर्मेशन चाहिदी है। सब तो इंपॉर्टेंट करैक्टर प्ले करदा है सिटीजनस। नाउ सिटीजनस दे विच आई टोल्ड यू NRIs are also included because they are at the end Indians। NRIs ਨੂੰ ਆਪਾਂ include ਤਾਂ ਕਰਤਾ amendment ਕਰਕੇ RTI ਦੇ ਵਿੱਚ that NRIs can also have the access to the information। बट प्रॉब्लम कित्थे आई? प्रॉब्लम आई कि सेंट्रल लेवल ते साडे कोल RTIonline.gov.in करके एक पोर्टल हैगा है, बट स्टेट लेवल ते अगर आपां नूं इन्फॉर्मेशन चाहिदी होवे ते की साडे कोल स्टेट लेवल ते भी पोर्टल्स हैगे ने? सो इफ आई टॉक अबाउट 2 states, that is Maharashtra and Delhi, they have the state level portals
where you can file the online application to ask for the information. Obviously कोई NRI है, इंडिया तो बाहर है, how it is possible for him to come here and then file the application? It is very difficult. अपने कोल दो तरीके ने RTI फाइल करन दे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, पर NRIs ऑफलाइन तरीका था, it is very difficult for them to adopt this, but they'll have the easy option of the online portals. So at central level we have that online portal, at state level we are still lacking in the infrastructure development. Okay, coming to now information, अगर ता आपा उन्हां बारे किसी तो public authority तो उन्हां बारे लेनी होवे, that's then it's very easy for them to give us the information. But अगर आपा information किसी third party बारे लेनी होवे, now हुन की होएगा, third party बारे अगर आपा information लेनी होवे ते आपा अगेन एप्लीकेशन पावांगे, एप्लीकेशन कितना फाइल की जाएगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन। हुन ऑनलाइन ते ऑफलाइन किसी भी तरीके ना तुसी मान लो एप्लीकेशन फाइल कीती कि तुसी एक पर्टिकुलर सी पर्सन दे बारे पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहते हो। नाउ इफ यू वांट द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन, जेड़ा भी पब्लिक अथॉरिटी PIO ਤੁਹਾਨੂੰ इंफॉर्मेशन देगा, पर अगर वो किसी दे बारे ਤੁਹਾਨੂੰ इंफॉर्मेशन देगा, he need to have the permission from that third party. पब्लिक अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन है अबाउट दैट थर्ड पार्टी जेदे बारे तुसी इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी तो मांग रहे हो, लेकिन पब्लिक अथॉरिटी ਤੁਹਾਨੂੰ इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता बिफोर आस्किंग द थर्ड पार्टी, क्योंकि वो थर्ड पार्टी तो पूछे बिना ओदी इंफॉर्मेशन ਤੁਹਾਨੂੰ दे देगा तो ओदा राइट टू प्रिवेसी आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ इनफ्रिंज हो जाएगा। इस करके थर्ड पार्टी के बारे इंफॉर्मेशन देने तो पहला PIO ਨੂੰ थर्ड पार्टी ਨੂੰ पूछना पड़ेगा। So whenever this PIO will receive the application regarding the information from the third party, for example, I filed the application that I want the information from that particular third party about that particular third party and the information is available with you. Please provide this information to me. PIO will say that I cannot provide you the information till the time I have to talk to this third party. ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ PIO ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗਈ ਤੇ PIO ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ PIO ਕੋਲ ਆਈ ਉਹਦੇ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ विद इन 5 days of that application received by the PIO ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇਗਾ, ਕਿਸਕੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇਗਾ ਕਿਹਨੂੰ, ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ PIO ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਾਓ ਦਿਸ PIO will send 5 days notice to within 5 days notice to this third party. Now third party ਨੂੰ ਜਦੋਂ 5 days ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, now third party is having 10 days. This third party will reply within 10 days that whether the information about him which is available with PIO should be given to me or not. Yes or no? Third party will say okay, give the information, or not okay with giving the information. इस करके क्योंकि 10 days we have given to the third party to reply on us, अपने को 30 days का time period सी, PIO had 30 days to provide me the information, but now I will exceed it to 10 days more because I have given the 10 days to the third party to reply. So those 10 days will not be included in the 30 days we give to PIO. So in this case, PIO will take 40 days to provide me the information. These days are very important because on the basis of the expiry of these days, if you will not get the information within these days, you can file the appeal. So yes, these days plays the great role. Talking about CIC and SIC, that is the Central Information Commission and State Information Commission. I told you, पहला तुसी PIO ਨੂੰ application पाओगे, not satisfied या ਤੁਹਾਨੂੰ information 30 days ਚ नहीं provide ਕੀਤੀ गई or due to other reason you are not satisfied, you can file the first appeal and the first appeal will be filed to the appellate authority, जो भी इमीडिएट हायर अप होगा। और फर्स्ट अपील आपने 30 डेज में फाइल कर दी, स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, फिर तुसी सेकंड अपील पाओगे। सेकंड अपील किहनू पाओगे, CIC सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। हुण आपां लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दीज कमीशनस, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ते स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन आपां दोनों नू कॉरस्पॉन्डिंगली करांगे सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द टू ईजीली। Parallel authorities ने, one is at the central level and one is at the state level. अगर इन्हां दी establishment दी गल करिए, Central Information Commission
it's at the central level. Obviously it should be established by the central government. So Central Information Commission is established by the central government. If I talk about the State Information Commission, State Information Commission is established by the state government. Now a second appellate authorities ne at the state level or at the central level. Now a commission च कौन who all are the members, composition की है, कौन हुंदा है ए commissions च. सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन च एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हुंदा है. सो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज आल्सो CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज आल्सो in the short form CIC, but there is difference between the two. That is the total commission. Here I am talking about कि कौन who all are there in the Central Information Commission and the State Information Commission. So we are talking about the composition. Central Information Commission ਦੇ ਵਿੱਚ we have one Central Information Commissioner. Central Information Commissioner, plus there are 10 information commissioners. So one is the Central Information Commissioners and there are 10 information commissioners. If I am saying there are 10 information commissioners, it means there cannot be more than 10 information commissioners. There can be 6, there can be 7, there can be 2, okay, but not more than 10. But one Central Information Commissioner will always be there. In the same way, if I talk about the State Information Commission, there again we have one State Information Commissioner plus we can have information commissioners. How many? Not more than 10. But it can be lesser than 10, right? So correspondingly, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ Central Information Commissioners plus not more than 10 information commissioners. And in the State Information Commission, there is State Information Commissioners plus not more than the 10 information commissioners. If I talk about the headquarters कितने ने? Central Information Commissioner दे headquarters ने Delhi च, ते State Information Commission दे headquarters ने उस particular state दे विच state government किते भी particular state दे विच किते भी बना सकती है. For example, पंजाब दा किते भी बना सकती है, महाराष्ट्र दा किते भी बना सकती है. So it depends upon the state. अगर आप गल करिए इन्हां दी अपॉइंटमेंट दी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स प्लस इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स इन द केस ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स प्लस इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स इन द केस ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिशन. नाउ दे आर अपॉइंटेड at the when I talk about the Central Information Commissioners or the Information Commissioner at the central level, they are appointed by the President. Right, they are appointed by the president. पर president नु recommendation कौन करता है? एक particular committee. और वो committee च कौन होता है? PM, opposition दे leaders, ते होर cabinet दे members. और अगर आप State Information Commission दी गल करिए, ओदी composition जेडे State Information Commissioners plus Information Commission है, ओदे corresponding कौन है? We have the governor. Governor कितना appoint करेगा? On the recommendation of a particular committee, and on the particular recommendation of the committee includes CM, that is the chief minister, and then the opposition leader plus the other cabinet ministers. If I talk about what is the main role ਆਪਾਂ main तक देख लिया that this is the second appellate authority. और उस तो बड़ी power की है? They give the directions, they manage the commissions. Okay, अगर आप देखिए कि who can be these commissioners, चाहे वो Central Information Commissioner होवे, Information Commissioner होवे, State Information Commissioner होवे या Information Commissioner होवे. They said who can all be these members? There is particular eligibility, कोई qualification required है. They said public eminent person. Any public eminent person. Now this public eminent person includes any person who is having a particular knowledge or particular experience about these things. So there is no particular qualification or eligibility criteria for this. Here the only requirement is this should be the eminent person having a particular knowledge or experience in this field. Okay, talking about the RTI Act, let's conclude what is RTI Act now. RTI Act is the act where we were able to overcome the practice of the corruption. You must have heard about different cases. जिद्दां कि अपने कोल 2G scam दा case है. There was a fraud of 175 lakh crore. Next we have Adarsh housing scam also. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी RTI file ਕੀਤੀ गई सी, and as a result CM of the state सी उस time ते Ashok Chauhan ji, he also had to resign.
then we have Commonwealth Games, we had Commonwealth Games in Delhi. ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ RTI ਪਈ ਤੇ it came out to be that there is a fraud of 70,000 crore. So the major role was played by Aruna Roy before 2005, which led to the enactment of the RTI Act 2005, because Aruna Roy participated and started many campaigns for the poor and the marginalized people who want to have the information on the funds with the government. So with this, I just want to conclude that it is the practice to curb the practice of the corruption, to hold the government authorities liable, to bring the transparency in the system, to hold them answerable so they are made accountable for the same. And rest, we are in today's life, I believe even everybody knows that we have the right to information, where we can file the RTI and ask for the information on any of the subject matter, provided, because this right has been given by Article 19 to us, that is Article 19 of the Constitution of India. हमारे संविधान की Article 19 ने हमें ये right दिया है, जो right बात करता है speech and expression की, कि हम कुछ भी speech कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली हम कोई भी इंफॉर्मेशन भी मांग सकते हैं. ये तो 19(1)(a) में बोला, लेकिन 19(1)(2) में रिस्ट्रिक्शंस भी बोली हैं कि आप ये राइट प्रैक्टिस तो कर सकते हो, फंडामेंटल राइट है, यू हैव द फंडामेंटल राइट, यू कैन आस्क फॉर दिस, बट देयर आर रिस्ट्रिक्शंस टू इट. रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं कि अगर ये सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को इन्फ्रिंज करता है, अगर ये सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को इन्फ्रिंज करता है, अगर ये इफ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द सिक्योरिटी ऑफ आवर नेशन, if it is going to affect the friendly relations of our nation with the other nations, then you cannot practice this right. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ RTI Act 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਦ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਸੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਜਿਹੜਾ RTI Act ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, that information cannot be provided to you if it is going to affect the sovereignty and integrity of the nation, if it is going to affect the security of the nation. Accordingly section 9 भी यही ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਜਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੈ, you cannot have the access to this information, you will not be given this information. In the same way ਆਪਣੇ ਕੋਲ section 25 ਵੀ ਹੈ RTI Act ਦੇ ਵਿੱਚ, which talks about ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, that can be held confidential by the public authorities, you will not be given access to this information even if you will file the RTI. So these restrictions cover some points where even if you will file the RTI, you cannot have access to this information, because this is written in Article 19 restrictions also of the Constitution of India, and correspondingly we have section 8, section 9, section 24 of the RTI Act also. So ਇਹ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ RTI Act 2005 ਦਾ.